हेलो वेलकम बैक टू Campuswala, वन स्टॉप फॉर ऑल योर कॉलेज क्वेरीज। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं B.Tech फ्रॉम MIT-WPU यूनिवर्सिटी के बारे में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लेकर आया हूं। But before starting, I request you all to please subscribe to our channel and don't forget to press the notification icon so you won't miss any updates from the videos. So I get started. Established in 2017, MIT-WPU University is a private university located in Pune with 150 plus programs in management, engineering, design and more. MIT-WPU consistently ranks among the country's top universities. MIT Pune is a part of MIT's MIT group of institutes. MIT-WPU University School of Engineering is accredited by NBA. MIT-WPU through various schools of study offers UG, PG, diploma, certificate and other courses to students across management, engineering, design and other streams. NIF ranking की बात करें, the engineering categories or they are under the band of 101 to 150th. बात करते हैं इनके B.Tech प्रोग्राम के बारे में। So MIT-WPU admission accept the B.Tech program through jeemain, CET, para-CET, neetug scores. It is a 4 years full-time program that is spread across 12 trimesters. MIT-WPU also offers B.Tech lateral entry with the same specializations as offered under the B.Tech program. Apart from this, candidates can also pursue a 6 years integrated B.Tech course after 10th. अगर आप 10th के बाद भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 6 years का integrated B.Tech course मिल जाता है in MIT-WPU. बात करें फीस के बारे में। So for B.Tech Computer Science and Engineering, it is 3,55,000. For B.Tech Computer Science and Engineering, Artificial Intelligence and Data Science, it is 3,55,000. For Cyber Security and Forensics, it is 3,55,000. For B.Tech Electronics and Communication Engineering, it is 3,15,000. For B.Tech Electronics and Communication Engineering, Artificial Intelligence and Machine Learning, it is 3,15,000. For 3,00,000 Electrical and Computer Engineering, it is 3,50,000. For civil engineering, it is 2,55,000. For civil engineering, smart infrastructure and construction, it is 2,55,000. For mechanical engineering, it is 3,15,000. For robotics and automation, it is 3,50,000. For chemical engineering, it is 3,50,000. For bioengineering, it is also 3,50,000. For petroleum engineering, it is 2,55,000. For material science and engineering, it is 2,55,000. ये कोर्स वाइज मैंने आपको फीस बता दी है MIT-WPU। बात कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। सो हाईएस्ट सैलरी इनकी गई है 51.36 LPA, एवरेज इनका गया है 7 lakhs, इनका एवरेज LPA गया है। मीडियन है 6 lakhs इनका गया है। टॉप रिक्रूटर्स आर Accenture, Amazon, Deloitte, Federal Bank, Genpact, IBM, Infosys एंड JSW Steels इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल अभी आपके पास आ रहा होगा कि हमने जो एग्जाम दिया था उनके अकॉर्डिंगली, उनके स्कोर्स के अकॉर्डिंग हमें टॉप कॉलेजेस के एडमिशन नहीं मिल पाया। क्या हमें उन स्कोर्स के बेसिस पे इंडिया के टॉप कॉलेजेस हमें मिल सकते हैं? वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या वहाँ स्पेशल सीट्स या मैनेजमेंट सीट्स अवेलेबल है या नहीं है? इन सारे सवालों के लिए ऑल यू हैव टू डू जस्ट टू गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर टू शो यू ऑन योर स्क्रीन। ड्यूअल प्लान नंबर पे कॉल करें, हमारे काउंसलर्स आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू गाइड करते रहेंगे। दे विल लेट यू नो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल टू यू अकॉर्डिंग टू योर स्कोर्स व्हिच यू हैव गॉट, या फिर जो भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं, about the admission process, about the special seats and management seats, and about the fee structure. They will let you know each and every information. All you have to do is just to give us a call on the helpline number. So thank you so much for watching. See you another video.